जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे सप्तम्या वायवीय संहिता अथैक्विंशोऽध्यायः। वायुरुवाच ततत्रिसद मुख्यास्ते विष्णुशक्रपुरोगमा सर्वे भयपरित्रस्ता दुद्रुवुर्भयविह्वला निजैरदूषितैरङ्गे दृष्ट्वा देवानुपद्रुतान् दण्डयान दण्डितान् मन्त्वा चुपको गुणपुङ्गव ततस्त्रिशूलमादाय सर्वशक्तिनिबर्हणम् ऊर्ध्वदृष्टिर्महाबाहु मूर्खा ज्वालासमुत्सृजन् अमरानपि दुद्राव द्विरदानीव केसरी तान् भिद्रवतस्तस्य गमनं सुमनोहरम् वारण्यस्येव मत्तस्य जगाम प्रेक्षणीयतां ततस्तक्षोभयामास महत्सुरबलं बलि महासरोवरं यद्वन् मत्तवारणयुथप विकुर्वन् वन्बदुधा वर्णान् नीलापाण्डुरलोहितान् बिभ्रद्ययाद्राजिनं वासो हेमप्रवरतारकं छिन्दन् भिन्दन्तु दन्किल्लन् दारय प्रमथन्नपि व्यचरदेव संगेषु भद्रोऽग्निरिव कक्षग तत्र तत्र महावेगात् चरन्तं शूलधारिणं तमेकं त्रिदशा सर्वे सहस्रमिव मेनिरे भद्रकाली च संकुद्या युद्धवृद्धमदोहद्वदा मुक्तज्वालेन शूलेन निर्विभेदरणे सुरान् स तया रुरुचे भद्रो रुद्रकोपसमुद्रुव प्रभयेव युगान्ताग्निश्वलया धूमधूम्रया भद्रकाली तदा युद्धे विद्रुतत्रिदशा बभो कल्पशेषानलज्ज्वाला दग्धविश्वजगद्यथा तदा सावाजिनं सूर्यं रुद्रारुदगणाग्रणी भद्रो मूर्ध्वेन जत्यानाशु वामपादेन लीलया असीभिपावकं भद्र पट्टिशेस्तु यमं यमिं रुद्रान् दृढेन शूलेन मुद्ररैवरुणं द्रुते परिद्वेर्निवृत्तिं वायुं टक्कैष्ठक्कधर स्वयं निर्विभेदरणे वीरो लीलयैव गणेश्वर सर्वान् देवगणान् सद्यो मुनिशम्भोर्विरोधिन ततो देव सरस्वत्या नासिकार्य सुशोभनं चिच्छेदकरजाग्रेण देवमातुस्तथैव च चिच्छेद च कुठारेण बाहुदण्डं विभावसो अग्रतोद्रयङ्गुलां जिह्यां मातुर्देव्या लुलाव च स्वाहा देव्यास्तथा देवो दक्षिणं नासिकापुटं चतर्ककरजाग्रेण वामं च स्तनचूकुकम् भगत्स्य विपुले नेत्रे शतपत्रसमप्रभे प्रसंह्योत्पादयामास भद्रः परमवेगवान् पुष्णो दशनरेखाञ्च दीप्तां मुक्तावलीमिव जध्यान धनुषः कोट्या स तेनास्पष्टवाग्भूत ततश्चन्द्रमसं देव पादाङ्गुष्ठेन लीलया क्षणं कृमिवदाक्रम्य घर्षयाभास मासभूतले शिरश्छिद्देव दक्षस्य भद्रपरमकोपत क्रोशत्यामेव वैरिण्यां भद्रकाल्ये ददोच तत्पृष्ठा समादाय शिरस्तालफलोपमं सा देवी कन्दुकक्रीडां चकार समराङ्गणे ततो दक्षस्य यज्ञस्त्री कुशीला भर्तुभिर्यया पादाभ्यां चैव हस्ताभ्यां हन्यते स्म गणेश्वरे अरिष्ठनेमिनं सोमं
धर्म चैव प्रजापतिं बहुपुत्रं चाङ्गिरसं कृशाश्च काश्यपं तथा गले प्रगुह्य बलिनो गणपासिंह विक्रमा भत्सयन्तो भृशं वाग्भिर् नजनुर्मूर्धिन मुष्टिभिः घर्षिता भूतवेतालै दारासूत परिग्रहा तथा कलियुगे जारै बलेन कुलयोषित तच्च विध्वस्तकलशं भग्नयूपं गतोत्सवं प्रदीपितमहाशालं प्रभिन्नद्वारतोरणम् उत्पाटितसुरानीकं हन्यमानं तपोधनं प्रशान्तब्रह्यनिर्दोषं प्रक्षीणजनसञ्चयं क्रन्दमानातुरस्त्रीकं हताशेषपरिच्छदं शून्यारण्यनिभं जज्ञे यज्ञवाटं तदार्तितं शूलवेगप्ररुग्णांश्च भिन्नबाहुरुवक्षस विनिकृतोत्तमाङ्गाश्च पेतुरुव्यां सुरोत्तमा हतेषु तेषु देवेषु पतितेषु सहस्रश प्रविवेश गणेशान् क्षणादाहवनीयकं प्रविष्टमथ तं दृष्ट्वा भद्रं कालाग्निसन्निभं दुद्रावमरणाद्वीतो यज्ञभृगवपुर्धर स विस्फार्य महाच्चापं दृढज्यादोषं भीषणं भद्रस्तमि दुद्राव विक्षिपन्नेव सायकान् आकर्णपूर्णमाकृष्टं धनुरम्बुदसन्निभं नादयामास च ज्याम्दाखं च भूमिं च सर्वशं तमुपश्रुत्य सन्न्यादं हतोऽस्मीत्येव विह्वलं शरेणार्धेन वक्रेण सविरोध्वरपुरुषं महाभयस्खलत्पादं वेपन्तं विगतद्विषं मृगरूपेण धावन्तं विशिरस्कं तदा करोत् तमीदृशमवज्ञातं दृष्ट्वा वै सूर्यसम्भवं विष्णुपरमसङ्क्रुध्यो युद्धायाभवदुयुधत तमुवाह महावेगात् स्कन्देन नतसन्धिना सर्वेषां वयसां राजा गरुडपन्नगाशन देवाश्च हतशिष्टाये देवराज पुरोगमा प्रचक्रुस्तस्य साहत्यं प्राणांस्तुमिवोधता विष्णुना सहितान् देवान् मृगेन्द्र क्रोष्ठुकानिव दृष्ट्वा जहास भूतेन्द्रो मृगेन्द्र इव विष्यथ। इति श्री शिवमहापुराणे सप्तम्या वायवीयसंहितायां पूर्वभागे देवदण्डवर्णनं नामैकविंशोऽध्यायः। जय गुरुजी।